age being 25, then perhaps, to my mind, legislation could not do it through ordinary legislation. Constitutional amendment was required. But in this case, the declaration emanates from the law itself. So law is being given a certain time frame. Is pe kuch roshni dal? My lord, it depends on the validity of the law. That's why I tried to argue that under what proceedings we are before my lordships. I rely on PLD 2012 Supreme Court 923, Baz Muhammad Kakar, Federation of Pakistan. It is the case where Contempt of Court Act 2012. आपने सारा आर्गुमेंट सुना हुआ है, proposition बता देना please. My proposition is through ordinary law, Parliament cannot amend the Constitution. No, fair enough. It has not amended the That's what I'm trying to tell We you. have added in the Constitution because how do I demonstrate that Whether the court can amend the Constitution, court can interpret it? interpret in a manner to amend the Constitution or to No, my read lord. into the Constitution. No, my lord. So this is what we are asking from you, whether the interpretation can be done. देखिए इसमें एक बात आप ये आप कह रहे हैं 62(1)(f) में ये बताया गया है कि डिक्लेरेशन होना चाहिए कोर्ट से, और आपने कहा कि डिक्लेरेशन सिर्फ ट्राइब्यूनल दे सकता है. ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 157 वो ग्राउंड्स बताए गए, ठीक? क्या उन ग्राउंड्स में ये बात है कि ट्राइब्यूनल इस बात पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि आप राइटियस नहीं हो, आप सजेस्ट नहीं हो, आप अमीन नहीं हो, आप सादिक नहीं हो? ऐसी डिक्लेरेशन आएगी तो 162(1)(f) इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. That's what I'm saying. That in my case, FA degree was forged, BA degree was forged. Trial क्या आप हमें डिक्लेरेशन कहाँ से आया आपके केस में? Election Tribunal. देखिए खुरम साहब, एक चीज है, देखिए, speaking for myself, there is no confusion in my mind that to set aside a judgment, the premises on which that judgment stands needs to be taken away. So if the judgment stands on a law, then there could be an amendment in the law, and that foundation of that judgment on which it stands is taken away, and that judgment is nullified. If the judgment stands on the Constitution, constitutional amendment is required to take care of. There's no, as far as I'm concerned, no. I'm saying in this particular case, 62(1)(f) is not a disqualification. The judgment does not stand on 62(1)(f) as such. It stands on a declaration by a court of law. My lord. That declaration is not done through Constitution. That declaration must be of based on some law. That law now provides a period of 5 years for such declarations. Hence, that premise, that declaration that's coming out of a law has been given a period. So wo khatam ho jati baat, 5 years then plugs that problem. Election Tribunal has to determine on the basis of qualification, disqualification given in Election Act as well as 62-63. Why I am saying is I have also appended parliamentary debate from Senate on the amendment. It's at page 28. They have admitted it's silent. Once they have admitted it's silent, the only requirement. What do you mean? It is admitted is silent. What does this mean? I mean, in parliamentary debate, which we can look into to see. Why don't you look at the Constitution itself? I don't know. देखिए ये from Hebdo. Do you know what Hebdo was? My lord. One dictator. My lord. Throwing out everybody. My lord. Followed by another dictator. Throwing out everybody. Following by a third dictator. Throwing out everybody. Are you forgetting all these things? No, please, एक second ठहरिए ना. The Constitution, original Constitution, did not have these D, E, F, G clauses. My lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? Correct. And why you gave it no importance? Either say we support dictatorships. Hang on, ऐसे नहीं होगा ना. We can, जरा बात तो सुन लेना. आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे. या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं. जब पार्लियामेंट में जो 326 लोग बैठ करके कानून साजी कर रहे हैं, जो अब 326 से पहले कम होते थे, वो एक कानून साजी कर लें और उन्होंने ये किताब हमको बना के दे दी, और फिर एक शख्स टहलते हुए आते हैं, वो कहते हैं बाहर जाए कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एब्डो कर दिया. तमाम पाकिस्तान के सियासतदान इंक्लूडिंग my father was disqualified because he had the mistake of helping make Pakistan.
But a general, you prevailed over everyone. You are not even attending the constitutional thing. You are supporting everything done by a military dictator, having precedence. Now show us this thing, then the next dictator comes along and says, no, I introduce graduate condition. The third dictator comes along and says, no, I introduce Sadiq, Amin, righteous, profligate. अगर देखें एक कॉन्सेप्ट है मुनाफिक का कॉन्सेप्ट, मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से। काफिर को तो पता नहीं रोशनी उस है नहीं, काफिर कुफर का मतलब है खिलाफ, ठीक है, उसको पता नहीं। मुनाफिक को पता हो के करता है, अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रोफिलिगेट अमीन वगैरह। ये चीजें पिक एंड चूज करना, किसी को उठाना किसी को फिट करना, ये बातें अब व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट? यू आर ट्रीटिंग दिस एज अ सिविल सूट. You are saying a disqualification by a military dictator, a rapist can contest elections, but a person who makes a mistake, उसमें ये भी लिखा है कि कितने तोले सोना आपके पास है, ठीक है, आपने 6 लिख दिया, मालूम आपके पास 8 थे, तो you are disqualified. आप आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम आपको होल्ड करते हैं कि बुरा ना माने कि you are a profligate, you wasted the time of the court. कल आप इलेक्शन में तक नॉमिनेशन पेपर आएंगे, आप कहेंगे देखिए ये जजमेंट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू बी अ प्रोफिलिगेट, ही वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड. So let's not forget small things. We start focusing on small things. Let's look at the larger picture. Look at the context in which these amendments were brought into the Constitution. Look at Article 225. उसको आपने totally नजरअंदाज कर दिया है. Except you're not even saying a word about Article 225. It says no court shall. वहां आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट नो कोर्ट में नहीं आएगा डेफिनेशन में, यहाँ कोर्ट में आ जाएगा. तो ये आप जरा टोटलिटी में बात कीजिए. Let me submit. I was referring to, if you look at the amendments, 62(1)(f) was amended in. First one, is it a good amendment? It was amended. I'm asking your opinion. I'm talking about 18th amendment. I'm asking your opinion. 85 not good amendment, but 62(1)(f) is good. I'm talking about 18th amendment. क्या उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं. वो लोगों ने कहा कि चलिए आधी जमहूरियत आ जाए पूरी से तो बेहतर है. प्लीज आप देखें ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं. आप सवाल का जवाब दें, खुद में फिर जो कहना चाहते कहें, जो सवाल का जवाब आप कर लेंगे. I agree with you. I am against dictatorship. I am for the constitution. Reflect this in your arguments. What I am submitting is, when they amended and added a law, court of law, declaration by court of law in 62, at the same time they added 10A. ये तो पार्लियामेंट ने किया, ये भी पार्लियामेंट ने किया 18th amendment में. 18th amendment is a validation. Please don't equate it with amendment thought out by the parliamentarians. जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे वो हमारे elected representative होते हैं, ठीक है, उनकी cumulative wisdom है. Surely it prevails over the wisdom of a military dictator. My lord. So why are you disregarding the wisdom? Why is the constitution being just, if it's a dictator, we cannot touch it? ये नहीं करें ना, आप मजीद पॉइंट आर्ग्यू करें. I am submitting my arguments on the basis अच्छा, of. next point बताएं, क्योंकि you're not making headway now. You stopped. My lord, my next point is that when they brought in amendment in section 232 of the Election Act, during the parliamentary debate, it was admitted that Article 62(1)(f) is silent regarding period of disqualification. I have appended a copy of Senate's proceedings, which says. We don't need to. It's obvious it's silent. It's silent. Yes. Now my submission is, once they have admitted that it's silent, they have to bring in constitutional amendment. So let's put it another way. My lord. Suppose we say 232 is not good law. My lord. And we also hold that judgment of the Supreme Court is also not good law. My lord. Then there is no disqualification at all, not even for a day. My lord. Yes? Yes.
then they have to amend So the you say the constitution. wisdom of 5 gentlemen sitting in this courtroom overpowers the wisdom of 326 parliamentarians sitting on in the next building. For what reason? Give us a reason. Give us some logical reason. I mean, just because it said so. That's all. Parliament had the power to fix 5 years in Article 62 बात नहीं 1F, समझ but रहे they हैं। did not. अच्छा चले आगे बढ़े ना, थोड़ा डिबेट को आगे ले चलें। देखिए अगर इंटेंशन होती है लेजिस्लेचर की, वकील साहब, अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती कि कोई सजा होनी चाहिए, जैसे 63 में बताया गया कि अगर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन हो, कन्विक्शन पूरी होने के, सेंटेंस पूरी होने के बाद 5 years और 3 मुख्तलिफ बताए, 5 years 3 years, उन्होंने पीरियड बता दिया। तो क्या इनका इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे पीरियड ना बताने का, सिंपली इट इज That's what I'm saying. If they had the number and the intention, they would have expressly mentioned it in 62 1F, like they did it in... Why not we should consider it as positive कि इसके कोई सजा ही नहीं है, तो कह दिया कि फलां शख्स झूठा है, बस दैट्स ऑल। या प्रिज्यूम किया जाए हर शख्स सच्चा है unless proved to the contrary, ये अल्फाज भी लिखे हैं, हर शख्स, If you look at- क्यों प्रिज्यूम करें कि वो झूठा है जब तक वो साबित Constitution is silent about period of disqualification, which constitution... चलिए next point पे चले ना, you are repeating yourself now. So your second A argument. lot of people to be heard. That Let us थोड़ा speed it up, please. Only constitutional amendment would have done this. ये का- My lord, Ego. that is my Aage submission, chalo. only constitutional We amendment. understood that. And I support this argument with this thing as well in Article 62. They have given various period of disqualification, 3 years, 5 years, 4 years, depending on the gravity as Parliament thought at that time. Repeat yourself. ये आपने repeat yourself. I didn't understand. Article 63 has given 3 different periods of... No, I can just pose you a question. If in Samula Baloch, I'm writing now the judgment of Samula Baloch, imagine it, and I say that 62 1F does not prescribe the period of disqualification. However, I will see the other provisions of the Constitution and say that since for treason it's only 5 years disqualification, I think this is a lesser crime and I put 2 years. Suppose it would be as valid a judgment as Samula Baloch, correct? For no logical reasoning, it is what I decide. I have to base my decision, a constitutional interpretation, on some logic. Either you should say, I would be wrong in saying 2 years, because you just picked out a number from your head. It could be 3, it could be 4, it could be lifetime. Please address this query. There could be only 2 possibilities. No, why not 2 years? I write Samula Baloch and say 2 years. It's not written there. Exactly, so it's all up to do with my mind. But it's Nothing not to do with the written- Constitution. It's not written otherwise as well. चलिए मगर ये आप इसको अटेंड करें ना इस If बात it's को. silent, that means Understood your point. until it's in field. चलिए अगला पॉइंट या फिर हम किसी और से पूछें. this larger bench can revisit its own judgment. This larger bench can revisit its own judgment. That's Reinterpret. Election Amendment Act 2023. Now my submission is if we are in 187, then I can object on the vires of Election Act 2023. If we are only in appeal, then we cannot argue on the vires of the Election Act. आप तो वैसे चैलेंज नहीं करते उसे. You have not challenged worries of 232. That's not the question. It's not the question. Worries of 232 is not. Nobody has challenged the Viris in the High Court or in this court.
My lord, it has been challenged in the High Court. I've given you the There has petition. not been decided yet. तुम्हारे सामने नहीं है. My submission is, if we, because my lords have combined all these appeals along with section 124(3) petition. So my understanding, the way I. Your understanding should be found, the answer is in the order, the first order that we passed. Since election are scheduled for 8th of February, one returning officer will do one thing, another officer will do one thing. There should be clarity. It's as simple as that. Now, if you want utter, total confusion in Pakistan, that every constituency, one returning officer is saying, I will follow 232, another returning officer will say, I will follow Samiullah Baloch. So we have stated very clearly, we want clarity, one way or the other. The returning officer is not a competent lawyer as yourself, it's maybe a bureaucrat, so give him clarity. That's all we're doing. That's what I'm submitting before my lordship. While you are hearing this, you have also issued notices under section 27, order 27A to all the Advocate General and Attorney General. The world, to the whole of Pakistan, we issued notice. You might as well decide upon the virus of this thing. नहीं वो भी कर लेंगे, आप बता दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. That is my submission. कह रहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मैं कहता हूँ इस unconstitutional. I rely on Bas Mohammed judgment. एक बात बताएं, देखिए आप कह रहे हैं कि ये क्लियर पार्लियामेंट ने खामोशी इख्तियार की 62(1)(f) में कुछ बताया नहीं, उसको हमने इंटरप्रेट किया. अब हमारे बाद पार्लियामेंट ने इंटरप्रेट कर दिया. क्या पार्लियामेंट का विजडम हमसे ज्यादा है या कम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए? किसके इख्तियारात ज्यादा, ये बताएं. Parliament has to frame, my lord has to interpret. They have framed the law, They have framed they have framed the law, They had to interpret the constitutional provision. उन्होंने कह दिया कि ये हमारा wisdom था. They had to frame it under 239, 238, 39. They had to bring in constitutional amendment. आप लिखा दे बास काकड़ की citation लिखा है 2012. ALD, those are 2012 Supreme Court 923. And what paragraph are you relying for the Para 50. for declaring the law ultra vires? Declaring the law ultra vires. So लेजिस्लेटिव एंट्रीज के ऊपर वो केस है, उसके अंदर तो उन्होंने होल्ड किया है कि लेजिस्लेटिव एंट्रीज जो Thank you. Anything else? Huh? Sorry, we are giving you a tough time, but we want, sometimes tough questions help us resolve my lord. our own difficulties we are having in understanding things. My lord. Thank you. Very much for giving patience. Nani, thank you very much. Who will next? Michaels को हम पूछ लें या आपका? नहीं, आपकी कैटेगरी में जो आप आते पोस्ट ही कर उस्मान रहे साहब आ जाइए, और सब्जवारी साहब कहाँ हैं? सब्जवारी साहब. सब्जवारी साहब पहले करेंगे या आप करेंगे? एक सेकंड. He is senior, we'll ask him first. सब्जवारी साहब, आप जो मजीद पॉइंट्स ऐड करना है तो आप कर दें. My lord, I gratefully adopt the arguments of my friend, and my case is also. हाँ, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने आर्ग्यू किया. जी sir. जी. I owe an explanation, my lord, clarification. थोड़ा सा माइक की तरफ आ जाए. इधर माइक. हाँ. While gratefully adopting his arguments, I want to offer an explanation, clarification, that in my case of Mr. Muhammad Kashif, that is, my lord, CP number 2680 of 2021. I am questioning the order of the returning officer who found him disqualified because he had relied on a fake decree in past. The returning officer's verdict was set aside by the tribunal by an appropriate judgment. Dated 4 of May 2023 at page 9 of the paper book, my lord. Then a writ petition was moved, and that writ petition, the order of the tribunal was set aside and that of the returning officer was restored.
Zawari Sahab, you support the lifetime disqualification? My lord, I am telling that what is the point involved in my case. In fact, सब्जारी साहब जरा सा आपके लिए मैं वजाहत कर दूं और बाकी लोगों के लिए भी वजाहत कर दूं. हम इंडिविजुअल केसेस 5 year बैन है, नो बैन है, या समीउल्लाह बलूच लाइफ टाइम बैन है. तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली विल फॉलो जो भी डिसीजन होगा, बिकॉज वी आर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो आवर डिसीजन. तो हम आपका इंडिविजुअल केस आप बुरा ना माने, हम उसमें टच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी और भी प्लीज हों वो फिर अलहदा सुनेंगे जी. तो ठीक है जी, फिर तो अब हम सिर्फ वो आईनी नुक्ता और कानूनी नुक्ता देखना चाह रहे हैं. मेरे फादर दोस्त ने, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट करता हूँ जी. एक थोड़ी सी बात ये कहता हूँ जी जी. कि the original constitution framers could provide the time limit also in 62F. तो एफ था ही नहीं ओरिजिनल में. कर रहे हैं ना support. 18th amendment से पहले They could do so, amendment. As far as the amendment, your lordship were very rightly pointing out, that that was brought by a dictator, but then there were subsequent parliaments. And they, ये बात सही है आपकी, ये बात सही है. और फिर वो माइनॉट जो आया है 62 में अमेंडमेंट किया है 2010 में, उसमें कंट्रेरी कोर्ट किया. ये बात आपकी सही है बिल्कुल. दूसरी ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है, मेरे फादर दोस्त ने उस पर बहुत अच्छा एड्रेस किया जी, कि जो वो जजमेंट आई है दैट इज जजमेंट लॉ. समी साहब के केस में जजमेंट लॉ, और जजमेंट लॉ जब आ गया तो वो उसको जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो हो सकता है, इससे नहीं हो सकता. बाकी मेरी सबमिशन ये है जी कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे मैं हुआ हूँ, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई दूसरे हैं, वो चूंकि विदाउट ट्रायल हुए हैं, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी हुए हैं, विदाउट एविडेंस हुए हैं. आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी, उसके पेपर रिजेक्ट किए हैं ना जी उन्होंने. लाइफ टाइम जी नहीं, इस केस में जी एक इलेक्शन था जो तो आप उनको फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम रजा साहब को? खुर्रम रजा साहब को तो आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपका मुखालिफ डिस्क्वालीफाई? नहीं जी, मेरे क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुआ. तो आई एम कंफ्यूज्ड, देन व्हाई यू? मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो जो पोजीशन है कि वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो दो जजमेंट लाइफ टाइम को आप सपोर्ट करते हैं. आप कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो आपका क्लाइंट वो तो मैंने सर अर्ज कर दिया. जो अल्लाह दीनू केस है और जो केस है उसका सरदार. आप कह रहे हैं कि आप असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इवन दो आपका क्लाइंट डिस्क्वालीफाइड हुआ है. मैं समझ गया आपकी बात. ठीक. क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ये है जी मेरी. चलिए. और दूसरी ये है जी कि ये जो है ना, इसमें जो चीजें जिक्र की गई हैं, होनी चाहिए. एक बात आपसे पूछ रहे, ये जो आप कहते हैं ना डिग्री जाली डिग्री थी, रिपीट ना कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट बताइए जी, जल्दी बताएं. माय लॉर्ड, आप उनके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं? माय लॉर्ड पार्टली अडॉप्ट कर रहा हूं लेकिन मुकम्मल नहीं. जी. मैं पहले अर्ज करूंगा डिक्लेरेशन के बारे. जी मारा, नंबर बताएं केस का. मेरा नंबर है जी 984 984 और 2018 मारा. आपके मुखालिफ आप रिस्पोंडेंट ने अपेलेंट? मैं एपिलांट हूं माय लॉर्ड. अच्छा, उन्होंने क्या किया है जिसके खिलाफ आप आए हमारे पास? उन्होंने मैट्रिक अपने आप को डिक्लेयर किया 2018 के इलेक्शन में. अच्छा, तो आप डिग्री वाला केस पहले चलिए. अब आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें. 199 के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, जो डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन 199 के तहत ये मेन फीचर है आर्टिकल 199 का. विदाउट डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयरिंग एनीथिंग सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती. ये कायनी मुलाजा फरमाइएगा 199 में मालूम जी. पहला माय लॉर्ड सब सेक्शन सब क्लॉज 1 में पढ़ूंगा. सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन
a high court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. Now I'll go to Roman 2. Declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. Secondly, my lord, अब सी जो बी का रोमन 2 मुलादा फरमाइए. इस जगह ना उस्मान साहब ये डिक्लेयर कर देगा कि ये आपका नॉमिनेशन पेपर गलत है या आपकी डिक्लेरेशन गलत है ना. जी मालो, इतनी हद तक ही कर सकते हैं ना डिक्लेयर. नहीं मालो, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया. ये डिक्लेरेशन तो उसके लिए है कि एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन. जी मालो, सरकार के खिलाफ के लिए, आम आदमी के लिए थोड़ी है. मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं पहला सवाल ये था मालूम का डेक्लेरेशन क्या 199 के ना हो सकती है. अगला मालूम देखिएगा, इसका रोमन 2 देखिएगा बी का जी. On application of any person made order requiring a person within the territorial jurisdiction of a court holding or purporting to hold office to show under what authority of law he claims to hold that office. ये भी declaration इसको subsequently होगी, वो भी जो वारंटों की jurisdiction है जनाब, ये तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ना. हाई कोर्ट, मैं यही याद कर रहा हूँ, हाई कोर्ट को वारंट जब इशू करती है तो डिक्लेयर भी करती है साथ, सिर्फ ये नहीं कहती कि आप This शो is the करें. original jurisdiction of the High Court under Article 199. Writ of co-warranto can be issued by the High Court. जी मालो. This is the only declaratory power यही है. नहीं मालो, बिल्कुल ठीक है, यही पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) में है. चलिए मान ले, आगे बढ़ें, आगे मैं अर्ज करता हूँ मालो. इसको इस तरह देख ले, मान लेते हैं ये बात है, तो हाई कोर्ट के सामने कोई डिग्री होगी, कोई डिक्लेरेशन होगी, तो हाई कोर्ट कहेगा हाउ यू आर होल्डिंग द ऑफिस. मतलब यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर उसके बाद लाजमी नहीं इलेक्शन लॉज के अलावा भी या इलेक्शन लॉज में भी समझे. आगे बढ़िए. आगे यूँ देखिएगा, मैं दोबारा आऊंगा मालूट. ए का सब जो क्लॉज रोमन 1 है मालूट. ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर पार्टी मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, ए प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do without declaring that what is the function of the person who is acting under the federal law or the provincial law. ये declaration नहीं हो सकती, ये order नहीं हो सकता. इसका मतलब ये है कि declaration inbuilt है इसमें. और इसी तरह देखिएगा मालूम बी का ये ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं 199 में, जो पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस, उनके ऑर्डर जिसके अंदर कोई एडिक्वेट रिलीफ रेमेडी नहीं होती है, वो रिट में डायरेक्ट आ जाते हैं. इसी तरह आप देखिएगा, बी राइट ऑफ अपील दी हुई होती है तो पहले अपील में जाते हैं. बी का 1 देखिएगा मालूम आप, इसमें प्राइवेट पर्संस की हेबियस कॉर्पस के वाले वो भी डिक्लेयर होगी कि दैट इज इलीगल. आप सबसे पहले 199 के ओपनिंग वर्ड्स पढ़ ले, when there is no remedy. मानो बिल्कुल ठीक बात है. इलेक्शन लॉज में अब काइंडली सी मुलादा फरमाइएगा. बी ये जो सी है मालो, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट. अब गुजारिश ये है कि ये डायरेक्शन भी विदाउट डिक्लेयरिंग कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करने में फेल हुए हैं. पॉइंट ये है मालो, आप हमें इसे पढ़वा रहे हैं. पॉइंट ये है कि डिक्लेरेशन के बगैर, मतलब डिक्लेरेशन दिए बगैर हाई कोर्ट 199 की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती. ठीक है, ओके. और इससे हमारे केस का क्या ताल्लुक हुआ? इसमें क्वेश्चन जनाब ये पूछा गया था कि क्या डिक्लेरेशन हाई कोर्ट प्लेनरी जुरिसडिक्शन की कोर्ट के अलावा कोई दे सकता है या नहीं दे सकता. मेरी हम्बल सबमिशन ये है, ठीक है, दे सकता है. चले आगे बताएं, आगे बताएं. अगली बात देखिएगा कि सेक्शन जो आर्टिकल 62(1)(f) है मालॉर्ड. एक सवाल मालॉर्ड ने ये पूछा था, दो में डिफरेंस क्या है 62 और 63? नहीं, मैं इधर यहाँ मैं खुरम साहब से डिसएग्री करूंगा मालॉर्ड. अगर सब आर्टिकल 2 मुलाजा फरमाइएगा ना 62 का ही, उसमें क्वालिफिकेशन का नहीं, उसमें डिसक्वालिफिकेशन का जिक्र है. यानी डिसक्वालिफिकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो, उसका मकसद एक ही है, चाहे वो प्री इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन. आई पर्सनली एग्री विद यू. मतलब सब आर्टिकल 2 बड़ा वादे. ठीक है, हाँ आगे बढ़े जी मालूम. उस पर तो इंटरचेंजेबल है ना. जी इंटरचेंजेबल, क्योंकि सब आर्टिकल 2 जो है वही वादे तौर पर कह रहा है. सही है. अब माय लॉर्ड, जहां तक ये बात है कि सेक्शन 9 की जो ओवरऑल जो जुरिसडिक्शन मतलब कोर्ट्स एक्सरसाइज करती हैं, सेक्शन 42 में करती हैं
یا کوئی اور لا بھی ہے جس کے تحت وہ ڈیکلریشن کی ڈگری گرانٹ کر سکتی ہیں. اور میری ہمبل سبمیشن یہ کہ سیکشن 9 آف دی CPC جو ہے وہ بیسیکلی جورسڈکشن دیتا ہے کورٹس کو ٹو ٹرائی آل کائنڈ آف میٹرز آف سول نیچر مائی لارڈ, اور اس میں سیکشن 42 ایگزاسٹو اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ دیر آر سرٹن ڈیکلریشنز which are not provided in section 42, but that may be a dispute between one party or another party, and that can be granted under section 9 of the CPC. So this argument is in my humble submission is not correct, that section 42 is an exhaustive provision, my lord. Now my lord, میں اب آتا ہوں 232 پہ my lord. Honorable my lord نے پوچھا تھا کہ 62(1)(f) میں جب ڈیکلریشن دی جائے گی تو وہ لا کے تحت دی جائے گی, لیکن میری ہمبل رائے میں جب بھی 62(1)(f) کی ڈیکلریشن دی جائے گی تو کورٹ کسی کو یہ ڈکلیئر کرے گی کہ ہی از ناٹ سیگیشیس, ناٹ رائچیس اور نان پروفلیگیٹ اور ناٹ آنےسٹ اور ناٹ امین. وہ ڈکلیئر کرے گی 62(1)(f) کے تحت. یہ نہیں ہوگا کہ لا نے اس کو اختیار دیا ہو کہ وہ کوئی آرڈر کرے اور وہ آرڈر اس لا کے تحت ہو, ڈیکلریشن اسی پروویژن کے تحت ہوگی. اس لیے سمیع اللہ بلوچ جو کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن پر بیس کرتی ججمنٹ ہے, اس کو جب تک ری وزٹ نہ کیا جائے اس وقت تک سیکشن 232 62(1)(f) جو ہے وہ امینڈ نہیں, وہ اسی طرح رہے گا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کورٹ سے یہ ثابت نہ ہو, کسی کورٹ سے, کمپیٹنٹ کورٹ سے, کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, آپ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. 63(1)(f) یہی کہہ رہا ہے ہمارا کورٹ کی ڈیکلریشن ضروری ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. And what is the definition of Sadiq and Amin? Or what is the definition of Sadiq or Amin? اس میں ایک چیز دیکھیے گا, یہ جو سب کوئی مرڈر کر کے آ جائے کوئی وہ نہیں شمار. کلوز 2 جو ہے نا مالر وہ بہت ضروری ہے اس کی, کیونکہ اس کلوز میں پیرا ڈی اینڈ ای جو ہیں ان کو تو اپلائی کیا گیا ہے مسلمس کی حد تک, ایف کو نان مسلم پر بھی اپلائی کر دیا گیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیں, یعنی ایک نان مسلم بھی ہی از باؤنڈ ٹو بی سگیشیس, رائٹیس, نان پروفلیگیٹ, آنےسٹ اینڈ امین. اٹ مینس کہ امین کا جو لفظ ہے اس کا وہ میننگ نہیں لینا چاہیے جو اسلامک کانٹیکسٹ میں ہے. ادروائز یہ اس کی کیا میننگ ہے؟ مطلب امین کا جو ڈکشنری میننگ ہے, ہی شوڈ بی امانت دار, ہی شوڈ بی امانت دار مائی لارڈ, ہی شوڈ بی امانت دار. امانت دار اسلام میں امانت دار کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ کیونکہ مسلمانوں پر اپلائی نہیں, یہ بھی مسلمانوں کے علاوہ نان مسلم پر بھی اپلائی کیا گیا. کہتے یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے وہ میننگ نہیں ہیں جو اسلام میں لیے جا رہے ہیں, یہ وہ ڈکشنری میننگ ہے, آرڈنری ڈکشنری میننگز جو اپلائی ہونے چاہیے. ادروائز یہ پروویژن مسلمانوں یہ باقی آئین تو انگریزی میں ہے, انگریزی کا ان کو لفظ پتہ نہیں تھا کہ امین کے لیے کیا ہوگا. میری امین جو اگر ہم آپ کہہ رہے ہیں ڈکشنری میننگ میں دیکھیں تو انگریزی کی ڈکشنری میں اٹھاؤں گا, اس میں امین نہیں ملے گا. نہیں ملے گا جان, تو مجھے لغت دیکھنا ہوگی اردو کی. ٹھیک ہے یا عربی کی آپ چاہتے ہیں ہم دیکھیں؟ نہیں, اردو دیکھیں یا عربی دیکھیں, ہمیں نہیں پتا, آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں تو یہ کروں گا امین اگر اوریجنلی اردو کا لفظ ہے تو پھر اردو کی ڈکشنری آپ دیکھی جائے گی. بتائیں نا کون سا لفظ ہے, یہ عربی کا ہے اردو کا ہے؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے لیکن اس کا اوریجن جو ہے وہ عربی ہی ہے, عربی سے ہی اس کو لیا گیا. اوریجنلی عربی کا لفظ, لیکن اب امین اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے. جنرل ضیاء کو امین کا انگریزی لفظ پتہ نہیں تھا یا ان کے لا منسٹر کو نہیں پتا تھا؟ نہیں, ان کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا. نہیں, I'm just trying to understand. باقی سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے, یہ ایک امین آر دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی اسلام میں جو استعمال ہوتا ہے صادق اور امین, اس کا مطلب وہی ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر یہ مسلمانوں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا, انہوں نے نان مسلم پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. کیوں نان مسلم بھی تو صادق اور امین ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس کی اسلامک ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال کیا جائے گا, اگر ڈکشنری میننگ ہو پھر تو وہ ہو سکتے ہیں. اگر اسلامک ٹرم کے طور پر استعمال کیا جائے گا پھر یہ نان مسلم پر اپلائی نہیں ہو سکتا. یہ جو ایسی چیزیں صرف کنفیوژن کے لیے ڈالی گئی ہیں, کوئی وجہ بھی تھی؟ نہیں, یہ تو کنفیوژن تو بہت پیدا ہوئی ہے. اسلام اور غیر اسلام میں امین کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. نہیں مالٹ, صادق اور امین دونوں کی, وہ ایک سچا آدمی ہو, امانت دار ہو, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. گڈ کیریکٹر کا آدمی تو نان مسلم ہو, مسلم ہو, گڈ کیریکٹر کی تو ایک ڈیفینیشن. کون ڈیٹرمائن کرے کہ فلاں شخص کا کریکٹر اچھا ہے, فلاں شخص امین ہے؟ مالٹ, یہ فائنلی تو کوئی خدا ہی ڈیٹرمن کر سکتا ہے, ہم آپ تو کر ہی نہیں سکتے. صحیح جواب آپ نے دیا, ماشاء اللہ. اچھا,
anything else? आपने बहुत आज pointedly जब ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, 232 ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डेक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। इसे समझाना चाहिए, ये बताइए ना। As amendment or the interpretation? गुजारिश ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं। 189 के तहत वही फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। अब योर ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा माय लॉर्ड इस हवाले से कि जो समीउल लॉ बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात को। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। The same learned author judge has also authored the judgment in Faisal Wavda case. मैं उधर ही आ- उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो can you reconcile the two judgments? Yes or no? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूँ कि समीउल लॉ बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावडा के Can you reconcile them or नहीं हो not? सकता माय लॉर्ड, लेकिन उसकी नहीं वजह हो से सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल लॉ बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो मैं सकता, आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है नहीं है रिकंसाइलेबल। ठीक। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी एक व्यू अगर मेरी है हेलो आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल बिल्कुल ठीक अमीन बात नहीं है। हो इससे मेरी तो you're being very fair. आगे बढ़िए। अब योर ऑनर देखिएगा, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 फैसल वावडा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 नाम बताएं जजमेंट है जी अलादीनो भाइयों केस माय लॉर्ड। ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना योर ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा कहिए आहिस्ता आहिस्ता। 2013 SCMR 1655 जी। समीउल लॉ बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल लॉ बलोच ये करेक्ट लॉ कहता क्या है अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज माय लॉर्ड। 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया? ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ, और जबकि समीउल लॉ बलोच में इस पर रिलाई किया गया है, इसको कोट किया गया है। पिटीशन अलाउड। जी मालूम ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम, ये मिस्टर जैसुमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल लॉ बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया और बाद में कौन सा वाला भाई हो? रिव्यू वाला भाई हो या मालूम ओरिजिनल अलादीनो भाइयों, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल लॉ बलोच, उसको रेफर किया, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ। तो रिव्यू के वक्त इसको फिर समीउल लॉ को नहीं उसमें कंसीडर किया? नहीं मालूम, उसमें समीउल लॉ भी डिस्कस कर दिया गया, यही प्रॉब्लम है मालूम। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। मौका नहीं देना। इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि dissatisfaction of the Supreme Court over the Samuel Love Loach is apparent due। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मतलब मैं तो अच्छा, कमाल कर दी। मतलब यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो समीउल लॉ बलोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको नहीं देख रहे जिसके मुतल्लक आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। अगली जो रोना मुलाजा फरमाइएगा जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल लॉ बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। No, my lord, that is in field. But this is one of the consideration for a reviewing of the judgment of the Samuel Love Loach. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge are 3-member bench judges. My lord. And Samuel Baloch is a 5-member. My lord.
that reason. To that extent, it will prevail over the three judges, even though the authors are the same. मालूट ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्लाह बलोच की इस वक्त. अब काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर. 2021 SCMR 988 मालूट. सॉरी दोबारा कहिए. 2021 SCMR 988. टाइटल 988. मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ मालूट. इसका टाइटल मैं मालूट. सॉरी मालूट. जी मालूट टाइटल में ढूंढ रहा था मालूट. सॉरी हम आपको बता देते हैं. सॉरी. केसरानी केस है, केसरानी. अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी. जी मालूट. अब मालूट गुजारिश इसमें ये है कि इसमें भी समीउल्लाह बलोच में जो डाइव टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मेलाफेडे नहीं थी. The same author. नो मालूट दैट इज द जजमेंट. लेकिन one of the member was the same. जी यानी मिस डिक्लेरेशन को मेलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया, गो के मिस डिक्लेरेशन थी. अगर समीउल्लाह बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती. आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी the court is trying to get away from some. My lord, and last judgment on this point. But the learned author is also member of the bench, my lord. though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi. My lord. And the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023. PLD 2023 Supreme Court, page 42. 42. इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई. इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड. एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था. एक मिनट जरा आ जाए. ये जरा दे दें 23. ए की डिस्क के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके, डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f) में या नहीं होगा. उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे माय लॉर्ड पेज 82 पे डील किया माय लॉर्ड. फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है. इसका सेकंड पार्ट दीजिए पेज 82. ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही है माय लॉर्ड जजमेंट. ये 82 किस पेज कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है माय लॉर्ड जो रेलेवेंट है. हमारे यहाँ किस पार्ट 72 में? ये फरवरी के पार्ट में है. फरवरी पार्ट भी दे दें फरवरी इसका. का पार्ट. इसमें दोनों जगह चल रहा है. इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू. मेजॉरिटी व्यू की बात कर. जी जी मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है माय लॉर्ड. जी पेज 82. माय लॉर्ड पैरा 4 योर ऑनर. ये शॉर्ट ऑर्डर एक सेकंड आने दें. माय लॉर्ड. Today you're all charged up, very good, precise to the point. थैंक यू माय लॉर्ड. Page 82, paragraph 4. माय लॉर्ड. जी. May I read, my lord? G. As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it must be such that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thwart and eradicate. The questions stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा माय लॉर्ड. 63 वाली बात है. अगर 63 की बात हो रही है, जी 62 नहीं, की इसमें फाइनल में 62 आ गया माय लॉर्ड. डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें? माय लॉर्ड इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं थी. सॉरी इसमें मालूम ये इसी के आखिर में है मालूम. सॉरी मैं गलती से कह गया था. ये इसी की जो है ना इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में पेज मैं मालूम. अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड. मालूम थर्ड पार्ट में तो मैरिड हुआ रहा है. डिसेंटिंग ओपिनियन है इसी में है मालूम. ये
इसी में कब में है सभी में होगा ना। 17, 146 page, my lord. 146. Para 117, page 146. May I read, my lord? 146. Era? Para 117, my lord. The last para of Ji, my lord. majority view. As regard the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be the case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a is seated, he can seek re-election in the by-election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4. The question stand asked accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि सम्यूला ब्लोच के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f) अप्लाई हो रहा है। इधर तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन ये अगर 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए, तो अब नहीं जरा एक सेकंड ठहरिए ना। अब जो आपने जो जजमेंट साइट किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(f) को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन। आप समझे ना बात? तो आपका जो पहला मौकिफ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों जजमेंट में। ऐसे नहीं है, काइंडली देखिएगा 1P हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए, तो 63(1)(p) में ले आए। वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए। यही इसका इसका मकसद था, बजाय इसके कि सम्यूला ब्लोच अप्लाई किया जाता 63(1)(p) में उसको लेके गए। इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए, 168 से निकले 69 168 पैराग्राफ 10 and 11 पढ़े तो 168 इसी बुक में। आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। इसी बुक में जी माय लॉर्ड। 168 मालो, पैराग्राफ 10 मालो, 10 and 11 both. 11. दोनों पहले 10 पढ़े बेटा। There are a variety of reasons why members of parliament decide to cross the floor. Therefore, there are views for and against it. Sometimes they cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents, whereas there is also a general view that the defection is because of corrupt practices. Creative incentives, moral turpitude, or for some other reasons. Article 62(1)(f) of the Constitution provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis
Shura unless he is sagacious, righteous, and non-profligate, honest, and mean. There being no declaration to the contrary by a court of law. The said provision of Constitution is in clear terms describe that only upon a declaration from a court of law someone can be considered as such. This court is in cases of so and so has held that an elected member can only be declared as no longer sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean after a declaration by a competent court of law in this regard. In order to further protect the fundamental right of citizen, Article 10A, my lord, introduced by the Constitution through 18th Amendment, according to the said article, for the determination of civil rights and obligation or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. Declaring someone as disqualified for any period to become a member of the Parliament is a penalty depriving him of his constitutional right without declaration. ये मालूम अगले बुक में चला गया अगली किताब में आएगा जी मालूम मैं पढ़ देता हूँ by a competent court of law after adopting due process through fair trial determining any right and obligation of person would be against his fundamental right guaranteed by the Constitution. In a democratic system there is always a difference of opinion and every member has a decision of right to dissent and debate in order to put a check upon the working and decision of the party and its head. Merely on the apprehension that a member has betrayed his party and thereby depriving him from his right of expressing views and the right of dissent will be against the basic concept of democracy enshrined in the Constitution. Thus, simply on the fundamental right of a member, without adopting due process and fair trial, he cannot be treated to be no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean. This will also amount to giving unbridled power to the PM, which will result in creating a culture of civil dictatorship. No member will then have a right to remove the PM, even if the latter himself remains to no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest, and mean, or if his policies are against the state, the Constitution, the interest of the constituents, the injunctions of Islam, or even contrary to the party manifesto. For these reasons, the Constitution makers intentionally did not include the word disqualification of a member for any period of time in 63A of the Constitution. May I read, my lord? Continue, my lord? Yes, we got it. So, my lord, एक सवाल मेरे जहन में शुरू में शायद यहाया साहब ने पूछ लिया था. What was the necessity of bringing two different articles in the Constitution? ये 62 and 63. ये 62 says कि a person shall not be qualified to be elected. और यहाँ 63 पे लिखते हैं a person shall be disqualified. What is the difference between? इसको डील किया गया है, योर ऑनर. सब आर्टिकल 2 जो है ना 62 का, उसी में डील कर दिया गया मालूम. पढ़ लें जी 62 का सब clause 2 है the disqualification specified in D and E. So that is not only the qualification but also the disqualification. मैं दोबारा पढ़ता हूँ. The disqualification specified in paragraph D and E shall not apply to person who is a non-Muslim, but such a person shall have good moral reputation. So मकसद दोनों का एक है. एक एंट्री के वक्त देखा जा सकता है. हाँ, एक बात जो खुरम साहब फरमा रहे थे कि इसको दो तरीकों से डील किया जा सकता है, उसमें ये जरूर हो सकता है. But I tend to agree with you कि मकसद दोनों का एक मकसद है. क्योंकि देखिए अब जैसे आप पहला वाला वो सिटीजनशिप वाली बात है ना, वो पहले वाले में उसको ही हैज टू बी अ सिटीजन, ठीक है. अब हो सकता है लोग फिर दूसरी नेशनलिटी ले लेते हैं, फिर वो 62 में नहीं फंसेगा, वो 63 में फंसेगा कि अब उसने दूसरी नेशनलिटी ले ली. था तो पाकिस्तानी नेशनलिटी, फिर उसने कहा चलो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ, जो कि फिर वो उधर फंस जाएगा.
تو میرے خیال میں اتنا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, دونوں ہی ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن. What I wanted to say earlier was, اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. دیکھیں 62(1)(f میں declaration is coming from another source, from another court. Constitution is recognizing that there is a declaration coming from some court. Once that declaration is there, then he's not sagacious and then he's disqualified. So Constitution is relying on a declaration coming from some source, some court of law. Now that declaration itself, کسی کیس کو نکال لیں, نامینیشن پیپرز میں ہوگی, وہ کسی ایکٹ کے تحت ہے نا, اس کی مس ڈیکلیریشن ہے وہ بھی کسی ایکٹ کے تحت ہے. سو دیٹ actual declaration is arising out of some violation of some law. Now that declaration is then borrowed by the Constitution, and the Constitution says then you stand disqualified. Samuel Baloch says that once that declaration stands, you stand disqualified. Now there could be a law introduced by the parliament saying that declaration of law which is arising out of a violation of a law is being given a period. That's 5 years. So that also sort of comes into Article 62(1)(f) with the declaration, that such a declaration which is given under the law, it's not under the Constitution, under the law will have a time frame. That's 5 years. So wo 5 years, so therefore one argument is that you don't require the amendment of the Constitution because the disqualification is inherently under a law, not under the Constitution. Hence, correction of the law or time frame given to a law would be read into that declaration, which is being borrowed by the Constitution in 62(1)(f). یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 5 years could be easily brought into 62(1)(f) through that. اگر تو صرف یہ کہا گیا ہونا کہ اس شخص کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ڈگری دی دوسرے ڈیکلیریشن ہے, دیکھیں all over in all the declarations it says کہ آپ نے مس ڈکلیئر کر دیا ہے, آپ نے ایسٹس چھپا دیے ہے. They're actually identifying an event and then we are building on that event کہ اس کی وجہ سے, کیونکہ اس نے ریٹرن میں اپنی پراپرٹی شو نہیں کی اس لیے یہ امین نہیں ہے. ٹھیک, سو ڈیکلیریشن تو صرف اس حد تک ہے کہ آپ کی نامینیشن پیپر میں یہ چیز کم ہے, ایفیڈیوٹ میں یہ چیز کم ہے, آپ کی ایسٹس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اٹس دی ایونٹ, دی ریسٹ از آل کنسٹرکشن کر کے ہم کہہ رہے ہیں نا. سو ڈیکلیریشن تو صرف اس حد تک ہے. اور ڈیکلیریشن آپ دیکھیں نا, کوئی ڈیکلیریشن نکال لیں, وہ ڈیکلیریشن کسی لا میں ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا نامینیشن پیپر از ناٹ ان دا کانسٹیٹیوشن, اٹ از فرام دا الیکشن ایکٹ اور روپا وٹ ایور. تو ڈیکلیریشن جو کورٹ دے رہا ہے وہ لا میں دے رہا ہے, تو پھر لا خود کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی ڈیکلیریشن جو لا میں ہوگی وہ 5 سال کی ہوگی, تو پھر وہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کئی ججمنٹس ایسی ہیں, آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایسی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا. پاناما کیس کی ججمنٹ میں واضح طور پر 62(1)(f) مینشن کر کے ڈسکوالیفائی کیا گیا. صرف یہ نہیں, ہاں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ والی ڈبیٹ الگ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے پاس جو ایشو ہے, از اٹ for duration of that parliament, is it a duration of 5 years, is it a lifetime? وہ باتیں ہم تو نہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ابھی, ہم تو صرف یہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ الیکشن سر پہ ہے اور یہ میٹر کو ریزالو کرنا ہے. تو اب آپ دوسروں کا ختم ہو گئے تو دوسروں کافی لوگ ہیں. اور 2 منٹ لوں گا. 63(1)(p) میں وہ قانون آ سکتا ہے جو جناب فرما رہے ہیں, 63(1)(p) میں. لیکن جہاں تک 62(1)(f) کا سوال ہے, اس کو بہرحال کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت 3(1)(p) میں آئے کہ the question is کہ جب آپ کہہ رہے ہیں دونوں کو انٹرچینجبلی آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر تو آپ کا آرگومنٹ. ابھی ہمارے پاس صرف سوال یہ کہ کیا لا میں یہ چیز آ سکتی تھی یا آئین میں امینڈمنٹ ہو سکتی تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں آئین میں امینڈمنٹ نہیں, تو وہی دیکھنا نا, اگر سپوز 25 سال جو آئین میں ڈسکوالیفیکیشن لکھی ہے اگر اس سے ریلیٹڈ ہوتا تو پھر تو آئین میں امینڈمنٹ آتی, یا آئین خود لا کی ڈیکلیریشن پہ ریلائی کر رہا ہے تو وہ لا کہتا ہے میری ڈیکلیریشن 5 سال کی ہوا کرے گی, تو پھر کیوں صرف اگر تو کورٹ نے اسپیسیفکلی 62(1)(f) میں کسی کو ڈسکوالیفائی کیا ہے پھر تو وہ بات وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے. ادروائز جنرلی اس کو سمجھ گئے. آخری بات ایک بات اس سے پہلے دیکھیں, اگر یہ تو سچویشن اس وقت آتی ہے جب نامینیشن پیپر سبمٹ کرتے ہیں, سپوز ریٹرننگ آفیسر یہ کہتا ہے کہ آپ نے فلاں چیز نہیں جمع کی, کیا یہ الیکشن ڈسپیوٹ نہیں ہے؟ اور اگر الیکشن ڈسپیوٹ ہے تو الیکشن لا تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کمپلینٹ فائل کرے گا اس شخص کے اگینسٹ, کیس چلے گا. تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہوا کہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس یہ پاورز نہیں ہے کہ ڈکلیئر کرے کہ somebody is disqualified for such a period. This declaration
ये इलेक्शन डिस्प्यूट बन गया ना, बिल्कुल ठीक बात है, इस पे दो व्यूज हैं योर ऑनर इस वक्त भी ऑनरेबल सुप्रीम। डायरेक्टली वो कर सकते हैं क्या? माय लॉर्ड वही मैं अर्ज करता हूं माय लॉर्ड, दो व्यूज हैं ऑनरेबल। नॉमिनेशन पेपर गलत फाइल किया, ठीक है, ही गेट्स ट्रैप्ड अंडर 62(1)(f). अब मुद्दत पार्लियामान की 3 साल भी हो सकती है, बाई इलेक्शन भी हो सकता है। एक सेकंड है जी, बाई इलेक्शन हो सकता है, 3 साल भी हो सकती है, या कोई आदमी मर जाए, उसने कहा चलो मैं दोबारा इलेक्शन लड़ लेता हूँ, तो उसकी सीट पे आ गया 1 साल बाद, तो वो आपका कहना ये कि ये 5 साल भी ज्यादा है? बिल्कुल, एक इलेक्शन एक नॉमिनेशन पेपर, वो चाहे किसी और नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होगा, किसी और सीट पे जाके नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दे, अगले दिन जमा करवा दे। अगर वो फिर किसी ने चैलेंज, इस आप ना इस तरफ से चैलेंज हुआ है ना उस तरफ से चैलेंज हुआ है, वैसे पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि इस वजह से भी 332(2) जो है वो अल्ट्रा वायरस है। नहीं अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि वो इट्स ओनली फॉर वन टाइम नॉमिनेशन पेपर, इसलिए 5 साल भी नहीं लगाया जा सकता उस पे कदम। आप कहते हैं 5 साल भी नहीं 5 साल भी नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं नॉमिनेशन पेपर टू नॉमिनेशन पेपर की हद तक। For that constituency. मतलब ये हुआ कि आप कहते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका इख्तियार सिर्फ पेपर रिजेक्शन की हद तक है, नथिंग एल्स। बिल्कुल नहीं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, लास्ट वेरी पॉइंट, गुड एंड नॉवल पॉइंट यू टेक। माय लॉर्ड लास्ट माय सबमिशन माय लॉर्ड, चंद जजमेंट्स में अर्ज करूंगा जो कि समीउल्लाह बलोच के इफेक्ट को मजीद खत्म करती है माय लॉर्ड। पहली है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 137। पहले साइट तो नहीं हुआ है? नहीं माय लॉर्ड, आई डोंट थिंक सो माय लॉर्ड जी। 137 इसमें क्या हुआ? 137। What's happened in this? इसमें माय लॉर्ड ये कहा गया कि डेक्लेरेशन बाय कोर्ट होनी चाहिए, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट। ये तो अभी ये दीजिए, लेकिन ये साइट नहीं हुई जजमेंट। नहीं ये नहीं साइट हुई है। ये कितने मेंबर बेंच है? सेकंड माय लॉर्ड, ये 1 2 3 नहीं, इसमें भी उम्र सब 137 137 सरदार यार मोहम्मद रिंद, जी माय लॉर्ड, ये तो इधर ही पड़ी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये माय लॉर्ड 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। but the same learned जी author। माय लॉर्ड, देन माय लॉर्ड एक का फैसला आता है। लाइफ टाइम बैन है। जी ये है लाइफ टाइम, लेकिन इस बात पे कि डेक्लेरेशन बाय द कोर्ट होनी चाहिए। अब अगली जजमेंट देखिएगा 2019। एक सेकंड। Disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution entails a lifetime bar eligibility as held by this court in Samiullah Baloch. ये तो इसको फॉलो कर पैरा 4 है मालूम, पैरा 4 है 141 पेज पे मालूम। हाँ वो पढ़ें फिर। The impugned judgment of the High Court have applied the bar of Article 62(1)(f) of the Constitution upon the petitioner without giving a finding that his declaration of Sanad al-Shahadatul Alamiya in his nomination paper filed in the year 2008 was a dishonest and deceitful action to meet the condition of graduate qualification in order to become eligible for contesting the general election. Apart from lacking such finding, the discussion in the impugned judgment is at best based upon a presumption and not on any finding or deduction made on the basis of any material qualifying as evidence. In the circumstances, the presumption drawn by the impugned judgment is conjunctural and cannot be made the ground for disqualifying the petitioner forever for contesting for holding an office in the constituent legislature of the country, my lord. Now, my lord, there is another judgment, 2019.
बताइए 2019 SCMR 1939, my lord. Page? 1939, my lord. 1943 and 1948 पे my lord इसका 194 पे my lord relevant citation my lord 1939 नहीं रेलिवेंट आप बता रहे थे my lord एक 1943 पे मुलाजा फरमाइएगा पैरा नंबर 7 my lord. May I read my lord पैरा 7? जी पढ़िए उसमें. We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded. आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, सर? पैरा नंबर 7 है my lord. 1943. Sorry my lord, ये भी उसी पॉइंट को है कि ये RO is not a court. RO is not a court. Para number 7 my lord. We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded in the said proceeding, nor does the order give any reason for disqualifying the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution. On the other hand, Learned Election Tribunal made a declaration against the respondent only under Article 63(1)(c) and none under Article 62 of the Constitution. In terms of the said law laid down by this court in judgment reported as so and so, the order dated 6/4/13 by the returning officer merged into the order of the Learned Election Tribunal dated 16/4/13. The disqualification imposed on the respondent by the returning officer under Article 62(1)(f) therefore did not survive. My lord, now the relevant इसमें एक minority view क्या था minority view भी बहुत relevant है my lord. That is at page number 1945. ये पैराग्राफ 10 पढ़ लें. I think ये इशू अब हमारे पास आ गए. एक कॉपी रह गई my lord मेरे पास. ये पढ़ें. I am of the view that serious constitutional issues. I am of the view that serious constitutional issues require to be addressed inter alia, whether the disqualification of the private respondent under clause D and F of subarticle 1 of Article 62 of the Constitution was passed by the court of law or otherwise, whether the disqualification of the private respondent, if any, would be permanent or otherwise in terms of the test laid down in Samuel Bloch case, whether the lack of bona fide on part of his petitioner in invoking the constitutional jurisdiction of High Court under Article 199 of the Constitution and having an alternate remedy under the election laws rendered the petition maintainable or otherwise, whether the disqualification of private respondent could be ignored by this court, keeping in view the law, dicta laid down in Sher Alam Khan and Raja Shaukat Aziz Bhatti case. Accordingly, for the reasons stated herein above, leave of this court be granted to consider and read the issue stated above. So we are lucky to have this. It wasn't a dissent. It was these questions. The learned single judge. The three-member bench said require consideration. जी मालूम, ये बिल्कुल ठीक बात. तो ये तो बात कब से चल रही है कि ये इशू आप फैसला कर लें. ये अब कब की बात है? 2019 की बात. 2019 की बात है. अगर 2019 अब हम 24 में आ गए 5 साल. ये अगर आप एक पैराग्राफ और पढ़ लें, ये 2019 SCMR पेज 1943 पैराग्राफ 9. पैराग्राफ 9 में समी लॉ को फिर डिस्कस किया. जी मालूम. Be that it may, in Samuel Bloch, we have held that disqualification of election candidate or a holder of elected office under 62(1)(f) of the Constitution comes into existence when he is declared by court of law to lack any of the qualities mentioned in clause F of Article 62(1)(f) of the Constitution. In the present case, the only declaration against the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution was given in summary proceeding by the returning officer on 6/4/2013. As already noted above, no evidence was recorded by the returning officer to sustain his finding, nor he recorded reason for invoking disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution. He is not a court of law, but a statutory forum of limited jurisdiction. Therefore, the condition that only a court of law can issue a declaration of disqualification under Article 62(1) of the Constitution. What I think the point that can be made is that this question that was raised by a bench has been agitating this court for a considerable period of time. My lord. Different voices, different judges are saying, My lord. like in this judgment also, let's resolve this once and for all. And so it's good that we are resolving it once and for all. और मैं चंद जजमेंट में लिखवा देता हूँ, प्रिसाइजली बता देता हूँ, बट टाइम क्योंकि बहुत हो गया. बता दें. मालूम एक है मालूम 2019 SCMR
1684 जी इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद डिक्लेयर कर सकती है किसी को भी दैट ही इज नॉट ए सगेशियस, ही इज नॉट अ मीन। नेम क्या है ऑफ योर पार्टीज? मैंने ये है निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान, निदा खोड़ो वर्सेस मौजम अली खान। Even without recording evidence. जी 1695 है मालूम इसका रेलेवेंट पेज, 1695 पैरा नंबर 7 मालूम। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। मालूम इसके बाद है मालूम 2019 SCMR 137 मालूम। ये सारे मामला 2019 में हुए। 2019 SCMR पेज है मालूम 137। इसका जो रेलेवेंट पेज है 141 है मालूम, पेज 141 नहीं, साइटेशन का 137 है मालूम, 137 रेलेवेंट एट पेज 139 पेज 141 मालूम जी। इसमें को वारंटो इशू हुई थी और वो ऑर्डर अपहोल्ड हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। हाँ? ठीक है मालूम। इसके बाद है मालूम इसमें क्या हुआ था? को वारंटो हाई कोर्ट से इशू हुई थी अगेंस्ट ए पर्सन हु वाज अ रिटर्न कैंडिडेट। उसके खिलाफ ये अपील जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वो ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पास इन को वारंटो वाज अपहेल्ड मालूम। नाउ मालूम PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732, दैट इज फेमस हबीब अकरम केस मालूम, पेज 732। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लार्जर बेंच ने ये फरमाया, ये लार्जर बेंच जजमेंट है मालूम। कितने जजेस? 732 सॉरी मालूम, नो मालूम ये नहीं, वो है मालूम PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 732 ये वो नहीं, सॉरी मैं इसको मैं बताता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन के ऑर्डर पर डिस्क्वालीफाई किया है फिर अपनी जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर। ये पेज ना 732 का जो रेलेवेंट पैरा है मालूम, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। ये 736 एंड 737 पेज पे मालूम। नहीं, ये हबीब अकरम नहीं है, मालूम ये हबीब अकरम नहीं, बीबी यास्मीन शाह जी सॉरी, ये हबीब अकरम नहीं, वो हबीब, और ये 3 मेंबर बेंच है जी मालूम। वो जो हबीब अकरम केस है मालूम, दैट नहीं, ये एक सेकंड, बीबी यास्मीन शाह का केस है और इसमें रेलेवेंट पोर्शन क्या है? 337 एंड 336 एंड 337 मालूम। 732 पे थे आप। सॉरी 737 36 एंड 37, ये पैरा नंबर 14 है मालूम। इसमें क्या होल्ड हुआ है? From perusal of original record, it is clear that and obvious to us that respondent number 1, whose name is BP Yasmin Shah and whose father name is Nadra, database is Ali Hussain Jamali, and whose date of birth according to her NIC and Nadra ये record। डिस्क्वालिफिकेशन कितने दिन का था? ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है मालूम। इसको ये जो ऑर्डर था नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन अथॉरिटी का, उसको अपहोल्ड किया गया मालूम। नहीं, डिस्क्वालिफाइड पीरियड तो नहीं लिखा है, ये लिखा है मालूम 62(1)(f में ही किया है इसको। बट पीरियड नहीं लिखा है, पीरियड नहीं लिखा, लेकिन 62(1)(f तो ये जो लाइफ टाइम नहीं है। अब उस वक्त तो लाइफ टाइम था मालूम। नहीं, जिस जो जजमेंट आई उस वक्त नहीं, इस जजमेंट में लाइफ टाइम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल इसमें है, सिर्फ 62(1)(f लिखा इसमें लिखा है डिस्क्वालिफाइड जी मालूम। सो द इम्प्लीकेशन विल बी इट वाज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दैट नॉमिनेशन पेपर। मतलब इसमें क्योंकि 62(1)(f पे रिलाई किया गया, इस उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया गया और उस वक्त के लॉ के मुताबिक पीरियड नहीं बताया, अलग पीरियड नहीं बताया। ठीक, आगे है जो पीरियड नॉट मेंशन। ठीक, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 578 मालूम, 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 578 मालूम। इसमें मालूम ECB का ऑर्डर था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर समरी प्रोसीडिंग में था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपहोल्ड हुआ। इसका 589 पेज मालूम रेलिवेंट है। शौकत अजीज भट्टी जी मालूम, पैरा नंबर 19 है मालूम। जी, इसमें क्या हुआ था? मालूम इसमें ECP ने एक आदमी को डिस्क्वालीफाई किया, वो रिट में गया, रिट जो है वो रिमांड हो गई कि आप दोबारा डिसाइड करें। उस रिमांड ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ECP आया
اور ECB کی یہ اپیل وہ آرڈر اپیل منظور ہو کے اس کو permanently disqualified declare کیا گیا. Permanently? جی my lord. In view of the facts, circumstances. Page? Page 589 my lord, para number 19. Here, the matter was converted into suo motu proceedings under Article 184. ٹھیک. My lord, یہ Yes, to the other. میں نے ایک پیپر بک تیار کی my lord. آخری میری سبمیشن صرف یہ ہوگی کہ چونکہ پاکستان میں جو لا آف جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں کہ کون سا ججمنٹ کس حالات کن حالات میں ری وزٹ ہو سکتا ہے, ریویو ہو سکتا ہے, اس پہ میں نے ایک یہ ایک پیپر بک تیار کی ہے جو آنر جو بیسیکلی میں پڑھوں گا نہیں مالور دیکھ لیجیے گا. ویسے اگر کہیں تو میں پریسائزلی عرض کر دیتا ہوں وہ گراؤنڈس کیا ہیں جن گراؤنڈس کے اوپر کسی بھی پریسیڈنٹ کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایکسٹریکٹ ہے فرام دی بک دی لا آف جوڈیشل پریسیڈنٹ مالور. اس میں یہ جو آپ نے کیس سائٹ کی پچھلے یہ 2018 سپریم کورٹ 578 اس میں ٹرائبونل میں نہیں گئے تھے بلکہ الیکشن کمیشن میں گئے تھے. الیکشن کمیشن میں گئے تھے. الیکشن کمیشن کے بعد ہائی کورٹ میں آئے تھے. ہائی کورٹ نے کیس ریمانڈ کیا. نہ ٹرائبونل یا آر او نہیں تھا مالور. ریلیونٹ پورشن بتا دیں. اس میں کوئی خاص پیجز ہیں جو ہم پڑھیں یا سارا آپ پڑھواؤ گے ہم سے؟ نہیں میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں, میں صرف ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں. نہیں اس میں پیجز صرف بتا میں دیں. پیجز بتا دیتا ہوں مالور, میں نے یہ نوٹ کیا ہے اپنے پاس. لا آف جوڈیشل پریسیڈنٹ ایک کتاب ہے گارنر کی, لیکن اس میں بس پیج بتا دیں. میں اس کے جناب پہلا پیج ہے مالور, پیج 3 مالور دیکھ لیجیے گا, نوٹ فرما لیں باقی بعد میں. پیج 3 بتا یہ ہے اپروول ایکسیپٹنس اینڈ ریکگنیشن آف اے ججمنٹ. یہ میں نے عرض کیا کہ کتنی اپروول. پیجز بتا دیں. پیج نمبر 3 مالور اس پیپر بک. پیج نمبر 9 ہے مالور, آؤٹ کریٹیسزم اینڈ ڈس اپروول. ٹھیک ہے. پیج نمبر 40 ہے مالور, 40 پلپبلی رانگ ڈیسیژن. یہ پڑھیے نہیں بس ٹھیک بتا دیں, ہم خود پڑھ لیں گے. 9 then 48 my lord, 48 then 56 my lord. آپ وہ سارے چیپٹرز ہی بتا رہے ہیں نا. جی جی بیسیکلی وہ ریلیونٹ چیپٹر جو ہیں وہ میں نے عرض کیا. 56 اینڈ دین پیج نمبر 13 پہ بھی my lord یہ اس کا وہ کیونکہ دوسرے سبجیکٹ ہے, پیج 13 بھی ریلیونٹ ہے اس کا. دین 18. So these are all the grounds to revisit and overrule it. جی میری ہمت سبمیشن یہ ہے کہ اس کہ صرف یہ ہے کہ یہ امپریشن جاتا ہے اور میڈیا پہ اس پہ روز بات ہوتی ہے کہ ججز کی کمپوزیشن چینج ہونے کے بعد فیصلے تیز ہوتے ہیں. یہ ججمنٹ ایسی ہے سمیع اللہ بلوچ کی جس کو ری وزٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے جسٹیفائیبل گراؤنڈز موجود ہیں. اور یہ اگر یہ لا آف جوڈیشل پریسیڈنٹ اس طرح ڈکلیئر کیا جائے تو پھر یہ معاملات آئندہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں. جو ہائی کورٹ یا کوئی بھی کورٹ جو ہے اس کو گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں جس میں آپ نے جوڈیشل پریزیڈنٹ کو چاہے کتنے ممبر ججمنٹ ہو اس کو ری وزٹ کرنا ہے اور کن چیزوں کو آپ نے کنسیڈر. آپ کا کہنا یہ کہ وہ جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے وہ پراپر نہیں ہوئی. میرا کہنا یہ ہے کہ وہ پراپر نہیں ہوئی اور اس کو ری وزٹ کرنے کے لیے یہ گراؤنڈ سفیشینٹ گراؤنڈ ہیں جن کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے. پراپر اگر اٹینڈ نہیں کیا تو کیا وہ ججمنٹ انکیوریبل ہے؟ صرف پراپر اٹینڈ نہ کرنا کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ پلپبلی رانگ ڈیسیجن ہونا, اپروول نہ ہونا اسی ججمنٹ کا سیم کورٹ سے, کریٹیسزم آنا فرام دی کورٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دی کورٹ, لیگل اسکالرس کا, پارلیمنٹ کی طرف سے ڈس اپروول آنا, یہ ساری چیزیں کنسیڈر ہو کے اور پھر اسٹیٹ ڈیسائسز کا پرنسپل کہاں اس کی ویلیو مطلب کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن میں اسٹیٹ ڈیسائسز جو ہے وہ اتنا فورس نہیں رکھتا. اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن میں اسٹیٹ ڈیسائسز بہت فورس رکھتا ہے, لیکن جہاں کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن ہوگی وہاں اس کا اسٹیٹ ڈیسائسز کی اتنی زیادہ فورس نہیں ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک مشکل کام ہے اور سپریم کورٹ اپنا اگر سمجھے کہ ہم سے رانگ ہوا ہے اس کو کریکٹ کر سکتی ہے. اسٹاری ڈیسائسز کا پرنسپل شاید ہم نے ابھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ذکر کیا ہے, پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. میں نے 3 ججمنٹس پڑھی ہیں, جو آنر کی پڑھی ہے, جج صاحب کی پڑھی ہے اینڈ جسٹس نہیں آئی ابھی جناب کی آپ نے پہلی پڑھی. نہیں جناب کی واحد ہی رضوی صاحب نہیں, ویسے ماشاء اللہ یو آرگیوڈ ویری ویل. I'm grateful.
argued before a larger bench before of this strength or no? Or I this is don't your think first experience? 5-member bench के सामने argue किया हमारा Chale, okay, but we appreciate you are very precise. And I would request others also to be very focused and precise. So thank you for your, we will take a short break. So Aji, Bhandari sir, we will come back. My lord, if I can just make a request, I don't claim any preferential right of audience. We'll hear you. My lord, because I have to, for personal and professional reasons, I have to be back in Lahore and the motorway closes because of the fog. That's also an issue. So if your lordship can... If you've heard all this, I probably they have reduced your, Mr. Khurram and Mr. Usman have reduced your work. So just more precise as you can be. I'm in the happy position of not representing anyone, just representing myself. So And you are in the unhappy position of not being paid. not being paid. That is true, my lord. Grateful. So we will return after a while. ठीक है? मेरी- अब ये सब भी मौजूद है जी So we'll hear. आगे resume तो at ऐसा करते हैं we will hear you last जी जी मैं आखिर में आऊंगा but we resume at 2 or 2:15. नहीं at least 2:15 it may be even longer The Mikey can be heard first. जी जी we hear Mr. Bandari then we'll hear Mr. Faisal Siddiqui and then we'll hear you and in the meantime ये दे दीजिए इनको पता नहीं इन्होंने देखा है another amicus has submitted a note तो वो अगर किसी के पास नहीं पढ़ना चाहे वो पढ़ लें Thank you everyone. एक छोटी सी सबमिशन मैं करना चाहता हूं. There is another serious question of law in this case and that is with regard to the applicability of Article 63(1)(h. मेरी अपील्स में जो What is H? 63(h) के जी कन्विक्शन अगर हो जाए और 2 साल की हो तो वो डिस्क्वालीफाई होता है जब तक वो 5 साल का टाइम लैप्स नहीं होता. तो जो इम्प्यून जजमेंट है मेरी अपील्स में उन्होंने उसको रिडंडेंट कर दिया है. उन्होंने ये कहा है कि इवन इफ What do you want? आई एम सेइंग कि वो जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाए. आप बेशक फैक्ट्स पे आई नो यू नहीं 63(1)(h) में आप चाहते क्या है कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन हो क्या हो अलर्ट वो तो लिखा हुआ है उसमें मैं तो कुछ चाह ही नहीं रहा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइन को फॉलो किया जाए उस प्रोविजन को क्योंकि जो लाइफ हुई है. But we'll hear you. आपकी लाइफ हुई है सर लाइफ नहीं हुई. No, but Saki will hear you. I mean, the batting order we've just explained. ठीक. Thank you.